सलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। फरमाने मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कीअं आहियो? उमेद आहे त ठीकु हूंदो, बिल्कुलु मज़े में हूंदो ऐं ख़ूबसूरत ॾींहं जी ख़ूबसूरत शुरूआति अवां जी थी वई हूंदी। मां आहियां अवां जी होस्ट सबा अली। अॼु असां करबला ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं करबला जो जेको वाक़ियो इराक़ में वाक़िअ पज़ीर थियो, इस्लामी तारीख़ जो हिकु अहम किस्सो, ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ हक़ ऐं अदल जी जदोजहद जो मिसाली नमूनो। वाक़िअ करबला जो मुख़्तसर पस मंज़र कुझु ईअं आहे त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वफ़ात खां पोइ उन्हनि जे नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम जी तालीमात ऐं अहकामात जी हिफ़ाज़त जो ज़िम्मो खंयो। ॿी तरफ़ यज़ीद उन वक़्त जो हुक्मरान हुयो ऐं पंहिंजी मर्ज़ी सां इस्लाम खे हलाइण जी कोशिशि पे कई। यज़ीद जी हुकूमत ऐं ज़िंदगी जो तरीक़ो इस्लाम खां बिल्कुलु उलट हुयो, उन जे बिल्कुलु ख़िलाफ़ हुयो। यज़ीद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खे पंहिंजी इबादत जो मुतालबो कयो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन ज़ुल्म ऐं नाहक़ हुकूमत जे ख़िलाफ़ बीही रहिया ऐं इस्लाम खे अञा फैलायो, उन जी तालीमात, उन जे अहकामात खे अञा फैलायो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पंहिंजे घर वारनि सां गॾु, पंहिंजे साथियुनि, पंहिंजे तमामु साथियुनि सां गॾु मक्का खां करबला जी तरफ़ रुख़ कंदा आहिनि, जिथे उन्हनि खे यज़ीद जे लश्कर बिहारण जी कोशिशि कई। करबला जे मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐं उन्हनि जे साथियुनि खे पाणी खां महरूम कयो वियो ऐं उन्हनि ते कुझु अहिड़ा ज़ुल्म कया ऐं उन्हनि खे वधायो वियो। 10 मुहर्रम ते, जंहिं खे आशूरा बि चवनि था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐं उन्हनि जा 72 साथियुनि खे पंहिंजी जान जी क़ुर्बानी ॾिनी ऐं उन सां गॾु उन ॾींहं खां पोइ अॼु ताईं ऐं ता क़यामत हक़ ऐं इंसाफ़ खे बुलंद कयो वियो ऐं तमामु मुसलमाननि खे असां उन ॾींहं खे मुहर्रम खे मल्हाईंदा आहियूं ऐं उन पंहिंजी अज़ादारी असां कंदा आहियूं। इन ॾींहंनि में असां जेतिरो बि पंहिंजो अफ़सोस ऐं ॾुख जो इज़हार कंदा आहियूं उहो घटि आहे ऐं जेतिरियूं दुआऊं कयूं उहे घटि आहिनि। सो उमेदु आहे त असां वधि में वधि दुआऊं कंदासीं तमामु उम्मत मुस्लिमान जे लाइ ऐं पंहिंजे ॾुख जो इज़हार कंदासीं। साइमा मूंसां मौजूदु आहे ऐं मुहर्रम जे हवाले सां छा ठाहे आई मां उन्हनि खां पुछंदमि। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? बिल्कुलु ठीकु ठाक, तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीकु ठाक। ऐं छा ठाहे आया आहियो अॼु मुहर्रम जे हवाले सां? खुशबू त मूंखे आई पई, मां सम्झी वियसि त बिरयानी हूंदी। सभिनी खां अॻु में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उमेद थी कयां त तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदव। मां तव्हांजी शेफ़ साइमा अॼु वरी हिकु नई रेसिपी सां गॾु तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियां। मुहर्रम जो महीनो हले पियो सबा ऐं असांजी हर मुमकिन इहा कोशिशि हूंदी आहे त असां जेतिरो क़दुरु थी सघे हिन मुहर्रम में जेको आहे नज़रो न्याज़ कयूं, सबीलूं बि हणंदा आहियूं ऐं वरी ख़ैरात बि कंदा आहियूं। त जीअं ॿियूं शयूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि मुहर्रम में, असां पंहिंजे नाज़रीन खे सेखारियूं बि आहिनि ऐं ईअं ई वरी जेका बिरयानी तमामु घणी जेको आहे हिन महीने में ठाहे करे विरहाई वेंदी आहे। छो जो अलाह जे नज़दीक सभिनी खां बहितरीनु अमल जेको आहे न उहो आहे हुनजी मख़लूक़ खे खाराइणु ऐं हिन ॻाल्हि जो मुहर्रम में ख़ासि तौर ते जेको आहे बंदोबस्तु कयो वेंदो आहे ऐं हिन सिलसिले में खोड़ सारी डिशिस ठाहियूं वेंदियूं आहिनि। त असां अॼु पंहिंजे नाज़रीन खे ठाहिणु सेखारींदासीं बीफ बिरयानी। ठाही आहे त उनखे असां घर में कीअं ठाहे सघूं था। हिन जे लाइ मां तक़रीबन वरितो 1 खां सवा कप तेल वरितो। ठीकु आहे। हुनमें मां तक़रीबन 4 बसर मां उहे विझी करे उनखे फ्राई कयो। सही आहे। वरी मां उनमें साबुत गरम मसाला शामिलु कया, जंहिंमें कमाल पट वरितो असां, 2 खनि दालचीनी जा टुकड़ा वरिता, 4-5 लौंग, 1 चांहि जो चमिचो असां ज़ीरो विधो हुनमें, 1 बादियान जो गुल विधो,
टे चारि नंढा फोटा, 2 खनि वॾा फोटा ऐं हुन में असां कारा मिर्च विधा साबुत। इन्हनि सभिनीनि खे असां चङे नमूने भुञियो। जॾहिं हुननि जी ख़ुशबू अचणु लॻी गरम मसाले जी, त असां हुन में गोश्त शामिलु कयो, गऊं जो गोश्त। ठीकु आहे। ठीकु आहे, उहो तक़रीबन किलो असां उहो शामिलु कयो। हॾी वारो वठो या हॾी खां सवाइ वठो, तव्हांजी पंहिंजी मर्ज़ी आहे। उहो विझी करे असां चङे नमूने उनखे भुञियो। वरी हुन में असां तक़रीबन हिकिड़े खां 1.5 खाइण जो चमिचो असां हुन में थूम अदरक जो पेस्ट शामिलु कयो ऐं हिकिड़ो चमिचो असां सावन मिर्चनि जो पेस्ट शामिलु कयो। उहो विझी करे असां उनखे चङे नमूने भुञियो। वरी हुन में असां मसाला शामिलु कया, जंहिंमें असां वटि तक़रीबन हिकिड़ो खाइण जो चमिचो ॻाढ़नि मिर्चनि जो पाउडर ऐं हिकिड़े चांहि जो चमिचो कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च, हिकिड़ो चांहि जो चमिचो हैड्र ऐं हिकिड़ो चांहि जो चमिचो असां ज़ीरे जो पाउडर विधो ऐं हिकिड़ो खाइण जो चमिचो असां धाणनि जो पाउडर विधो ऐं हिकिड़े चांहि जो चमिचो असां गरम मसाले जो पाउडर विधो। ठीकु आहे, ऐं तक़रीबन हिकु चांहि जे चमिचे खां घटि सम्झो 1/4 चांहि जो चमिचो असां हुन में जायफल ऐं जावित्री जो पाउडर शामिलु कंदा हुआसीं। ऐं हुनखे घणो न आहे शामिलु करिणो, छो जो हुन सां जेको आहे न हुनजो ॾाढी तेज़ हुनजी ख़ुशबू हूंदी आहे, थोरो घटि विझिबो आहे। चङे नमूने असां मसालनि खे भुञियो। वरी हुन में असां तक़रीबन 3 खां 4 टमाटा विधा कटे करे, हुनखे असां भुञियो। वरी असां हुन में पाणी विझी करे गोश्त खे ॻरण लाइ छॾे ॾिनो। सही आहे। जॾहिं असांजो पाणी ड्राई थी वियो ऐं असांजो गोश्त ॻरी वियो, त वरी असां हुन में 1 कप ॾही जो शामिलु कंदा हुआसीं ऐं हुनखे चङी नमूने भुञे वठंदा हुआसीं। वरी जॾहिं उनखां पोइ असां हुन में तक़रीबन 2 खनि लीमन जो रस शामिलु कयो, 4 खां 5 सावा मिर्च, सावा धाणा ऐं फूदनो, उहो विझी करे असां हुनखे दम ॾेई छॾींदासीं, त असांजो कोरमा तक़रीबन तयारु थी वेंदो। वरी चांवर जीअं ॿारबा आहिनि बिरयानी जे लाइ, असां तक़रीबन 3 पा चांवर वरिता। किलो गोश्त में 3 पा चांवर खपनि। ठीकु आहे, इहो हिन जो सही रेशो हूंदो आहे। चांवरनि खे असां लूणु विझी करे असां हुनखे उॿारे वरितो। ठीकु आहे, ऐं चांवर जेको आहे न हिकिड़ी कणी बसि रहिजी वञे चांवरनि में, त सम्झो त 70% असां चांवरनि खे ॻारींदासीं। ऐं सफ़ा फुल न आहे, 100% न आहिनि ॻारबा। ठीकु आहे, उहो वरी जॾहिं चांवर असांजा उॿरिजी वेंदा, त वरी असां हुनखे निथारे वठंदासीं, छाणे वठंदासीं, चांवरनि जो पाणी कढी वठंदासीं। वरी अॻु में जंहिं देगिड़े में वरी असां चांवरनि जी तह विझंदासीं अॻु में, वरी हिन जो मथे जेको असां कोरमो ठाहियो बिरयानी जो उहो विझंदासीं। वरी मथां असां कटियल टमाटा, कटियल लीमा, सावा धाणा ऐं फूदनो, इहो असां फैलाए छॾींदासीं। ऐं मथां जेकी बाक़ी चांवर आहिनि उहो विझी करे मथां असां ज़र्दे जो रंग थोरे पाणी में घोले करे उहो शामिलु कंदासीं। थोरो हिकिड़ो खाइण जो चमिचो असां केवड़ा वाटर उहो विझी करे असां चांवरनि खे दम लॻाए छॾींदासीं। शुरू में असां हुनखे तक़रीबन तेज़ बाहि रखंदासीं 5 मिंट। जॾहिं उहो भाप ठही वेंदी, त पोइ असां हुनखे हल्की बाहि ते 10 खां 15 मिंट असां हुनखे दम लॻाए छॾींदासीं, त असांजी जेका बिरयानी उहा तयारु थी वेंदी। ठीकु आहे, ऐं पोइ तव्हां हिनखे विरायो ऐं जीअं तव्हांखे करिणो आहे तव्हां हुनखे ठीकु आहे। ॾाढी ज़बरदस्त रेसिपी बीफ बिरयानी जी। थैंक यू सो मच साइमा, वॾी महिरबानी अवां जी। नाज़रीन, अगरि तव्हांखे रेसिपी ठाहिणी आहे सेम टू सेम जेका साइमा ॿुधाई आहे, यूट्यूब ते असांजी तमामु रेसिपी पयूं आहिनि, तव्हां हुनखे फॉलो करे सघो था। ऐं पंहिंजो जेको न्यास कंदो हुन में तव्हां बीफ बिरयानी जी इहा रेसिपी यूज़ करे सघो था। वञूं था नंढे ब्रेक ते, कारे न वञिजो, वरी पोइ वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। हुसैन दरख़े नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। फरमाने मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। 10 मुहर्रम बवक्त शाम हुसैन जख्म ही जख्म थे तमाम हुसैन जख्म ही जख्म थे तमाम हुसैन। प्यास कहती थी मुझको पी लीजिए,
प्यास कहती थी मुझको पी लीजिए, और सब्र कहता था मुझको थाम हुसैन, सब्र कहता था मुझको थाम हुसैन। 10 मुहर्रम बवक्त शाम हुसैन, जरा सोचो जरा सोचो जरा सोचो वो कौन था क्या था, जरा सोचो वो कौन था क्या था, कि जिसने रखा था इनका नाम हुसैन, कि जिसने रखा था इनका नाम हुसैन। 10 मुहर्रम बवक्त शाम हुसैन, जख्म ही जख्म थे तमाम हुसैन। वेलकम बैक नाज़रीन। रुबा शम्स नात खां असां मौजूदु आहे, उन्हनि जी ख़ूबसूरत आवाज़ में अवां मनक़बत ॿुधी। ऐं हाणे गेस्ट पैनल में असां वटि गेस्ट मौजूदु आहिनि जिन्हनि सां असां सिंध ऐं करबला जूं सक़ाफ़ती समाजी रिवायतूं छा आहिनि उन्हनि बाबति ॻाल्हाईंदासीं। सभिनि खां पहिरियों गेस्ट असां मौजूदु आहिनि जेके प्रोफेसर बेदार जाफ़री साहिबु असां मौजूदु आहिनि, मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ऐं जी वज़ीर अली अबड़ो साहिबु असां मौजूदु आहिनि, मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? सर, सभिनि खां पहिरियों त जीअं टॉपिक मां ॿुधायो अव्हांखे, ऐं सिंध में करबला जा नवां ऐं पुराणा कहिड़ा आसार मौजूदु आहिनि इन जे बाबति ॿुधायो। हा, सभु इंतिहाई अहम सवाल आहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। करबला ऐं सिंध हिकु सिके जा ॿ रुख आहिनि। करबला में जेको वहे वापरे थो उनजो फौरी रद्द अमल मुहबत ऐं मवदत में सिंध में ॾिसण में अचे थो। अफ्रीका जा मुल्क आहिनि ऐं ॿिया बि दुनिया जा मुल्क आहिनि, पर जेको सिंध में रद्द अमल आहे उहो हिकु अहिड़ी फिज़ा खे जनमु ॾिए थो जो पुराणे ज़माने खां वठी हेल ताईं, जॾहिं बि करबला जो वाक़ियो थियो ऐं अहले बैत अलैहिस्सलाम क़ुर्बानी ॾिनी त उन क़ुर्बानी जो असर बि हिते नज़र आयो। सिंध जा माण्हू इन मकतब सां रहिया आहिनि, हज़रत अली सां, हज़रत इमाम हुसैन सां, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सां, अहमद ताहिर सां रहिया आहिनि। ऐं उन्हनि जी अज़ादारी जो तमामु घणो असरु सिंध जे चपे चपे ऐं विख विख ते मौजूदु आहे। मसइलन जी मुहर्रम जी फिज़ा अची वई न, ईंदी असां वटि खटूं ऊंधियूं थी वेंदियूं आहिनि ऐं असांजे घरनि में सोग पइजी वेंदो आहे। इन में कंहिं बि फ़िरके मज़हब ऐं मतभेद जो को फ़र्क़ु कोन थो पए, हर माण्हू सिंध जो सोगवार आहे। कराची खां वठी कच्छ जे आख़िरी इलाइक़े ताईं सिंध करबला सां गॾु उथे वेहे थी। इहो सबबु आहे जो सिंध खां सभ खां वधीक ज़ाइरीन सवार करबला वेंदा आहिनि, या उन जेका मुहर्रम जूं ज़ायतूं थियूं थियनि। वॾे पैमाने ते मूं ॾिठो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे रोज़े में सभ खां वधीक तोहफ़ा अजरक जा पिया पवनि। उते बि सिंधी माण्हुनि जा दुकान आहिनि करबला मौला में। तंहिं करे जेको सक़ाफ़ती ऐं पंहिंजो समाजी रिश्तो आहे सिंध जो, उहो ॾाढो जुड़ियल आहे, तमामु घणो जुड़ियल आहे। ठीकु आहे, अव्हां छा चवणु चाहींदो इन बाबति? मां इहो चवणु चाहींदुमि त मसइलनि जेकॾहिं असां करबला ऐं सिंध जो हिक ॿिए सां जेको रब्त आहे उनजो तारीफ़ आहे, उहो तारीफ़ किथां शुरू थियो? मसइलो त सभ खां पहिरियों असां जेकॾहिं तारीख़ जे वर्कनि खे उथलाए ॾिसूं था त असांखे हिकिड़ो हमला आवर थो नज़र अचे
जेको हमला आवर हारिस बिन मरह अब्दी, जंहिंखे तक़रीबन जेको आहे अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो जर्नल हुयो। हालांकि इन खां अॻु में जॾहिं उहो सिंध ते आयो हमलावर थी, त उहो जेको अॻु में बि हज़रत उमर बि हिकिड़ो लश्कर उमाणियो, हज़रत उस्मान गनीअ बि उमाणियो, पर उहे सरहदनि खां थी वापसि विया हुया। हीउ हिकिड़ो बहादुर माण्हू, चुस्तो चालाक हो। मकरान में ख़ारिजिन हिते अची हिकिड़ी नंढड़ी हुकूमत क़ाइमु कई ऐं उन में हुननि बंदोबस्तु इहो रखियो त जेकर वरी इस्लामी हुकूमत ते हमिलो कजे या उन सां जंग कजे, उन्हनि तयारनि में मसूर आहे। उन जी खोज लॻाइण लाइ अब्दुल्ला इब्न अब्बास हिन खे मोकिलियो, हारिस बिन अब्दी खे। हीअ आयो हिते अचे हुननि जो किलो कमु कयईं ऐं हुननि खे फतह कयईं। फतह करण खां बाद हिकु अधु फारस जो हिसो बि फतह कयईं। उन फतह करण खां पोइ माले गनीमत सां गॾु 1000 कनीज़ूं ऐं मर्द हज़रात क़ैदी, इहे सभु कूफे उमाणे छॾिया। सही। हा, हीअ जंहिं महिल उते पहुता त उते कनीज़ुनि खे त तक़सीम कयो वियो, बाक़ी रही ॻाल्हि त मर्दनि खे आज़ादु कयो वियो। काफ़ी उतां मोटी आया, काफ़ी उन पंहिंजे नियाणियुनि जे रिश्तनि जे करे उते रुकिजी विया। अच्छा। हिननि जहिड़े वक़्तु इहा उते हुकूमत क़ाइमु कई, जंहिं महिल हिन सीस्तान जो इलाइक़ो फारस जो कब्ज़े कयो, त उते ईरान जो हिकिड़ो मशहूरु बादशाह, उन टाइम त फारस मशहूरु बादशाह ज़हाक जी औलाद रहंदी। उन जी औलाद मां हिकिड़ो होनहार फर्ज़ंद उनजो हुयो, जंहिंखे तारीख़ उनजो नालो जेको आहे नसब लिखे थी, नसब। त उहो वरी हुन वरी उतां जंहिं महिल हिननि जे मथां हमिलो थियो ऐं हे माना कब्ज़े ते अची विया, त उहो उतां माना सिधो निकिरी कूफे वियो मौला अली अलैहिस्सलाम ॾे। उन जी दरबार में हाज़िर थियो ऐं उन जे हथ ते वरी इस्लाम क़बूली। उन खां पोइ मौला अली खां बदस्त सनद हुकूमत वठी ऐं वापसि वरियो ऐं मौला उनखे सनद सां गॾोगॾु हिकिड़ो अलम बि ॾेई छॾियो। उहो बि अलम बि हू खणी आयो हिते सिंध में, पहिरियों अलम जी दाख़िला ऐं पहिरियों माना हितां ई असांजो माना करबला वारनि सां रब्त जी शुरूआति थिए। हे जंहिं महिल आयो हिते पंहिंजे तख़्त जे मथां उहो अलम बि हईं, कुझु फर्मूदाद बि मौला जा कयईं, हिकिड़ी मस्जिद बि ठारायईं, हिकिड़ो बहितरीनु तरीक़े सां हुन हुकूमत खे हलायो। हाणे हीअ जेके क़ैदी थी आया हुआ ब्राह्मण हिंदू कनीज़ूं जेके क़ैदी थी आयूं हुयूं, ख़ासि मकरान में हुयूं, मकरान खां माना वियूं, मकरान बि उन टाइम सिंध जो ई हिसो हुयो। जहिड़े वक़्तु उहो वापसि उहे आया न, त उन्हनि जेको टाइम उते गुज़ारियो त आले मोहम्मद सां हुननि जो जेको उथणु वेहणु ॾिसणु, हुननि जी माना सखा, हुननि जी सिलाई रहमी, हुननि जी इंसान दोस्ती, हुननि जो बुलंद अख़लाक, एतिरी करीमी जो हुननि ॾिठी त हीअ वीचारा पाण त हुया माना पंहिंजे हिंदू मज़हब जा सतायल ऊत नीच ज़ात पात जी चकी में पिठल हुया। हीअ इंतिहाई वॾा माना मरग़ूब थी विया आले मोहम्मद खां। जीअं जो वापसि आया, अचे पंहिंजी क़ौम में जो हिननि उन्हनि जी वाखाण ऐं दास्तान शुरू कया न, त पोइ धड़ाधड़ पे मुस्लमान थींदा विया। हालांकि हारिस बिन माना अब्दी जे हथ ते बि हज़ारे मुस्लमान थिया। अच्छा। हा, हितां ई असांजी ऐं रब्त ऐं करबला जो असां सां माना टच थियो। सही। अच्छा, मां ॿिन्हिनि खां मुंहिंजो इहो सुवालु आहे त जलवागाह इमामीन मकली जो अज़ादारी जी वाद में केतिरो हिसो आहे? ॾिसो, ठट्टू जेको शहरु आहे उहो यानी मकली वारो इलाइक़ो सिंध जे तारीख़ में चइनि हुकूमत जे दौरान कैपिटल एरिया रहियो आहे, दारुल ख़िलाफ़ रहियो आहे। उन सां गॾोगॾु हू जेका मकली वारो क़ब्रिस्तान आहे, उन में सॼी दुनिया जी किताबनि में दरियात के 10 लख क़बरूं आहिनि, औलिया अल्लाह जूं उते मज़ारूं आहिनि। उते कुदसी मख़लूक जो अचणु थिए थो,
इन जे विच में यानी मूं तो अखियुनि सां ॾिठो आहे त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ठटे जे भरिसां जेको क़दीम क़ब्रिस्तान आहे, जीअं मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी जी क़बर आहे, मखदूम मोइनुद्दीन ठटवी रहमतुल्लाह जी आहे, ऐं तमामु घणी बरगज़ीदा हस्तियूं मौजूदु आहिनि। उन्हनि में ई कुझु हज़रत इमाम ज़ैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम जी औलाद बि मौजूदु आहे। ऐं उते ई हिकिड़ो टुकड़ो हुयो जंहिंजो तोहफ़तुल कलाम में तारीख़ुनि में ज़िक्र आहे। ऐं तव्हांजे ज़हन में हूंदो त सिंध जो हिकिड़ो तमामु वॾो मौरिख़ रहियो आहे साईं अली शेर कानेव ठटवी, उन्हनि बि इन क़ब्रिस्तान जी ऐं इन जलवागाह इमामनि जी ज़िक्र कयो आहे। हिकु अहिड़ो हंधु जिते जलवो थींदो हो, जिते ॿकरियुनि खे अचण जो बि हुकुम न थींदो हो, ऐं उन्हनि ते पोइ पहिरियों दफ़ो सिंध जा जेके कलोड़ा हुकुमरान आहिनि उन्हनि तामीरात कई। उहो हाणे बि जेको ख़ितो आहे पंहिंजो मकलीअ जो, उहो अज़ादारी, अलम, ताज़े, ज़ुलझना ऐं ज़िक्र अहल बैत जो तमामु वॾो उते ठटे में मर्कज़ आहे। इहो हाणे खां कोन पर सदियुनि खां क़ाइमु आहे। ऐं इन ई मक़ाम जे लाइ मशहूरु आहे जिते आसमानी मख़लूक या वमा ख़लक़तुल जिन वल इंस इल्ला लियअबुदून, अलाह साईं हुकुम कयो आहे त मां जिन ऐं इंसान फ़क़ति पंहिंजी इबादत लाइ ख़ल्क़िया आहिनि। इंसाननि सां गॾु जिन्नात जो बि हिकिड़ो मर्कज़ आहे, ऐं उहे जेका आसमानी मख़लूक ते जेके असां मञूं था सभु मुस्लिम्स, उनजो हिकिड़ो मर्कज़ आहे। हिते रूहानियत आहे, नूरानियत आहे, कुदसियत आहे। लिहाज़ा जेके बि पंहिंजो वॾा वॾा मखदूम आहिनि जेके तारीख़ में रहिया आहिनि, उन्हनि जूं ख़बरूं उन जे भरिसां आहिनि। उते हिकिड़ी अजीब इंसान जी कैफ़ियत थी वेंदी आहे जिते सादात कराम उन जॻह ते मशहूरु आहे ते हज़रत अली साईं जा क़दम आहिनि। गारनमा हिकिड़ी जॻह ठहियलु आहे जिते मजलिसूं ऐं महफ़िलूं सॼो साल हलनि थियूं पियूं। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त उते जेको बि माण्हू वञे थो, ज़ाहिर आहे त जेके बि माण्हू जूं हाजात रवा थियनि थियूं अलाह जी ज़ात थी करे, बुज़ुर्ग ख़ुदा जी ज़ात आहे। अलाह ताईं पहुचण जे लाइ हिकिड़ो जेको ज़रियो आहे मकलीअ में ॿियनि सां गॾोगॾु ॿियूं तमामु घणा उते आसार उञाण मौजूदु आहिनि। उन्हनि सभिनी में जेको मुक़दम नज़र अचे थो उहो जलवागाह आहे इमामनि आहे, इमामनि जो जलवो। अहिड़े नमूने सां इहे जलवागाह ॿियनि हंधनि ते बि मौजूदु आहिनि। तव्हांखे शायदि नॉलेज में हूंदो त के माण्हू जेके आहिनि उहे नूरानी ते वञनि था, मक़ुरान जी तरफ़ वञनि था। इहो सिलसिलो हाणे जो कोन्हे, इहो सदियुनि खां वठी सिलसिलो हले थो पियो। सेवण जे मेले में जॾहिं कलंदर साहिब जो मेलो ख़तमु थींदो आहे त हज़ारनि जी तादाद में माण्हू पंधु उन तरफ़ वेंदा आहिनि, मौलाई क़िस्म जा माण्हू वञनि था। इहे रिवायतूं इहे थियनि थियूं, इन्हनि जा असां जॾहिं ताना बाना खणूं था, खोटाई कयूं था, त कंहिं न कंहिं नमूने सां उहो करबला मौला सां वञनि था। छाकाणि त हीउ जेको जलवागाह इमामनि आहे उन में बदस्तूर हिन वक़्तु बि जेको मूं ॾिठो आहे सैयद साबित अली शाह करबलाई जो मर्शो पढ़ियो वेंदो आहे। हिज़ हाइंस सिंध जो जेको मीर हुकुमरान हो नसीर ख़ान, उनजा मर्शा पढ़िया वेंदा आहिनि। ऐं हिज़ हाइंस जेको हुयो मीर अली हसन ख़ान, उनजा पढ़ंदा आहिनि। ग़ुलाम हैदर शाह कोसी ठटे जो आहे, साईं अज़ीम शाह आहे, पर्शियन जा, उर्दूअ जा, सिंधीअ जा मर्सिया हाणे बि उते पढ़िया वेंदा आहिनि। सोसख़्वानी बि थींदी आहे, ज़िक्र अहल बैत बि थींदो आहे, ज़ाकिरी बि थींदी आहे। अहिड़े नमूने सां उहो ठटे जे इलाइक़े में, या आउं चवां त लाड़ सिंध जी हिकिड़ी जान आहे सिंधू दरिया जे किनारे ते भरिसां भरिसां, जिते ज़िक्र अहल बैत रवां ऐं दवा रहे थो। सुभान अल्लाह। वज़ीर साहिबु अवां छा चवणु चाहींदा इन बाबति? मां तव्हांखे अञा बि इहो ॿुधाइणु चाहींदुमि त असां जेकॾहिं अवराग तारीख़ जी गुरदानी कयूं था पिया त असांखे इन वाक़े खां पोइ जेकॾहिं जेको मूं अॻम तबसरो कयो उन खां बाद जेकॾहिं ॾिसूं था त असांखे हिकिड़ो शिया सैयद, हालांकि उहो असना अशरी न आहे, शिया सैयद मुल्तान में आयल आहे ऐं उते अची हू हुकुमत थो थिए। ऐं हू जेको उनजो नालो जेको आहे उहो मोरखनि लिखियो आहे जाफ़र अल मलक। सो उहो जंहिंमहिल उते अचे थो, उहो जेको उते जेका तबलीग थो करे ऐं जेको इख़लाक़ी तौरु पंहिंजी हुकूमत खे क़ाइमु करे हलाए थो, उन वॾो असरु माना सिंध ते छॾियो। उन वक़्तु मुल्तान बज़ात सिंध जे अंदरि हुयो, इहो बि सिंध जे अंदरि। त उनजो असरु एतिरो माना वॾो हिकिड़ो ॾेखारियो जो हज़ारनि तादाद में उनजा शागिर्द बि थी विया ऐं इन ॻाल्हि में इज़ाफ़ो बि थींदो वियो ऐं मालिकनि सां असांजो आले मोहम्मद सां माना रब्त बि वधंदो वियो। उन खां पोइ वरी तारीख़ में असांखे हिकिड़ा 3 सिंधी दामन नज़र अचनि, जंहिंजा तक़रीबन जेके नाला आहिनि फ़र्ज सिंधी, ख़ालिद सिंधी, आबान सिंधी, जंहिंजो तज़किरो मौला जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जे तसनीफ़ास में बि मिले थो पियो। उहे जहिड़े वक़्तु हिते आया त उन्हनि बि अचे हिते दीन जी माना जेका तमामु वॾी तबलीग कई, बेइंतिहा उन्हनि माना हज़ारे ऐं सिंध ऐं पंजाब में गॾिजी तबलीग कई।
ऐं ॿिन्ही इलाइक़नि खे हिननि माना वॾो हिकिड़ो आले मोहम्मद जो हुन सां ज़रख़ेज़ करे छॾियो। तॾहिं खां वठी असांजी माना सिंध ते घणे खां घणो असरु जेको आहे आले मोहम्मद जो असांजे सिंध वसूल कयो आहे। माना हाणे ख़ुदा ॼाणे थो त इहो असांजो को अज़ली रिश्तो आहे हिननि सां। छो जेकॾहिं असां नज़र फिराए ॾिसूं था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खे त उहो निमाज़ पढ़ण खां बाद जंहिं महिल मुंहुं हिकु पासे करे वेहंदो त असाबनि हुन खां पुछा की भला तव्हां हुन पासे मुंहुं छो नथा कयो? जॾहिं बि माना काबे खां रुख फेरायो था हेॾे था कयो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो त मूंखे इन सिंध खां हिकिड़ी थधी हीर थी अचे पई। मुल्क त घणा ई हुया सिंध खां पोइ बि अॻ में बि, पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नालो सिंध जो कयूं त सिंध खां थधी हीर थी अचे। त इहो त को अज़ली रिश्तो ई ॼण उन्हनि सां असांजो आहे न। हालांकि उन्हनि सां असांजा निस्बी रिश्ता बि आहिनि। असांजी खोड़ हीअ 1000 कनीज़ जो हुते वई जमा थी, हुते तक़सीम थी, त उन्हनि मां त के इहे बि हुयूं जीअं हाणे मौला ज़ैनल आबदीन जेकड़ी ज़ौजा सिंधी आहे, जंहिंजो इस्म गिरामी हमीदा आहे, ऐं उन जे ई बदन मंझां शहीद ज़ैद सईद पैदा थियो। त असांजो उन्हनि सां माना हिकिड़ो ॻांढाप कुदरती तौरु माना सभ खां पहिरीं शुरूआत आहे। ऐं उनखां पोइ वरी जेकॾहिं ज़ैनल आबदीन खे वालदा बि बचपन में ॼमंदे ई शायदि गुज़ारे वई, त उनखे पालण वारी जेका हुई उहा बि सिंधी औरत हुई जंहिंजो नालो हो सलाफ़ा। सलाफ़ा खे इमाम ज़ैनल आबिद पंहिंजी हक़ीक़ी माउ जहिड़ी इज़त ॾींदो, ऐं उहा औरत वरी करबला में बि मौजूदु हुई वाक़ई में। ईअं ई करबला जे वाक़े में असांखे हिकिड़े ब्राह्मण जो बि ॾसु पतो पवे थो। त असांखे त ईअं थो नज़र अचे त शायदि कुझु सिंधी उते करबला में मौला सां गॾु जंग विढ़िया बि आहिनि, कुझु शहीद थिया आहिनि, त के वरी बची बुची वापसि सिंध अचे पहुता। त असांजो रब्तो सिंध जो उन सां तमामु घणो आहे, ऐं उन्हनि जो असरु बि घणो आहे। जीअं साईं जन मूंखे ॿुधायो त असां मुहर्रम जो चंड ॾिसंदे ई हर शइ असां वटि माना महबत तौर तब्दील थी वेंदी आहे। हीअ को शरई ॻाल्हि न आहे, महबत तौर तब्दील थी आहे। खटा ऊंधियूं कयो, सुरमो न पायो, खीर न पायो, ख़ुशीअ जी हर शइ खे तर्क कयो, लिबास खे कारो कयो, कारो नथा कयो त झूनो कयो, पुराणो कयो। त असां माना करबला जो असरु असांजे मथां अलाह जे फज़ल सां इंतिहाई आले मोहम्मद जो असरु सिंध क़बूल कयो आहे। जी अच्छा, ॿिन्हिनि खां मुंहिंजो इहो सुवालु आहे त हिन वक़्तु कराची शहर में अज़ादारी जूं रस्मूं कीअं थियूं अदा कयूं वञनि? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हिन नंढे खंड जे समूरे इलाइक़े में कराची अज़ादारी जो तमामु वॾो हिकिड़ो मर्कज़ आहे, ऐं जंहिंजो मां ज़िक्र कंदुसि कराचीअ जी पुराणी आबादी खारादर खां। खारादर जंहिंजे लाइ चए थो वञे त क़ाइद आज़म मोहम्मद जिना सां निस्बत रखे थी, उहो उन खारादर खे आबाद करण वारा झिरक जा सिंधी आहिनि, ऐं इहे समूरा एॾो समूरा आज़ादार आहिनि। खारादर शहर में हाणे तव्हां वञो त बड़ा इमाम बारगाह, छोटा इमाम बारगाह सां गॾोगॾु के 18 इमाम बारगाह आहिनि जिते ईरानी इमाम बारगाह बि आहिनि। हितां जी जेका आज़ादारी थींदी आहे नोह खां वञी थींदी आहे, असांजा पाड़ेसरी मुल्क बि उहो उनखे ॿुधाइनि था, टेलीकास्ट थिए थी हितां दिल्ली जी उहा थिए थी। उन खां वठी वरी जेकॾहिं थोरो तव्हां अचो क़ाइद आज़म जे मज़ार ताईं त उते शाह खुरास आहे, अज़ा खाना ज़हर आहे, अज़ा खाना अबू तालिब आहे, मार्टन रोड जो इमाम बारगाह आहे। कराचीअ जे हर सिमत में, हर तरफ़ में तव्हांखे आलीशान क़िस्म जा जेके आहिनि अज़ा खाना ऐं इमाम बारगाह नज़र ईंदा, जिथे जेके पढ़ण वारा अचनि था ख़तीबन अलामा अकीलुल ग़रबी आहे, दुनिया जो हिकिड़ो थिंक टैंक आहे जेके हिते अशराए मुहर्रम जे मजालिस में पढ़नि था, ऐं जेके असांजा इदारा ॿुधाइनि था त कराची शहर में कमो बेश रोज़ाना 4000 खां वधीक मजलिस अज़ाऊं थियनि थियूं। अशराब उन में शामिल आहिनि, जुलूस उन खां आहिनि, पिण शामिल आहिनि। तव्हां इमेज कयो न त उन में केतिरो न्याज़ थींदो हूंदो, केतिरी सबील थींदी, केतिरा आलम थींदा हूंदा, केतिरनि माण्हुनि जे अखियुनि मां ॻोढ़ा ॻणंदा हूंदा, केतिरियूं सड़कूं बंदि हूंदियूं। ऐं त कराचीअ जे जंहिं इलाइक़े, मसलन आउं आयुसि मलीर जे इलाइक़े खां, मलीर जे हर हंध ते मूंखे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं सबीलूं नज़र आयूं। राति मां गुलिस्तान जौहर पे घुमियो, इंचोली पे घुमी, त उते मूंखे जिथे किथे
कैसेटूं थियूं मिलनि, वखानी थी मिले, ईअं अहिड़े नमूने सां कराची मां सदियूं अॻु जी ॻाल्हि आहे त हितां जेको ख़ुम्स वेंदो आहे अहले तशीह जा माण्हू पंहिंजी कमाईअ जो, आमदनीअ जो 5 हिसो अहले बैत अलैहिस्सलाम खे ॾींदा आहिनि। सॼी दुनिया में सभ खां वधीक जेको वञे थो ख़ुम्स उहो कराची शहर खां वेंदो आहे। आज़ादारी हिते थिए थी ऐं मुतहरिक किताब, सभ खां वधीक किताब हिते था छपजनि, सभ खां वधीक लिटरेचर हिते आहे, सभ खां वधीक मर्चो हिते थो पढ़ियो वञे। जेतोणीकि इंडिया में उर्दू जे मरसे जी इर्तिक़ा थी आहे, पर अॼु उनजो मर्कज़ सॼो कराची आहे। कराची अज़ादारनि जो शहरु आहे, कराची इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे ग़म में विहण लाइ। ऐं इहो बि मां तव्हांखे अर्ज़ु कयां त उहो सिर्फ़ु मकतब तशहीह लाइ महदूद कोन्हे को, अहले सुन्नत आहिनि, हिंदूज़ आहिनि, ब्राह्मण, जेके ॿिया माण्हू स्कूल ऑफ थॉट रखनि था, जंहिंजे दिलि में अदादारी आहे उन में आहे। हिकिड़ो पहलू जेको साईं करे पियो उन जो मां सिर्फ़ु तव्हांखे थोरी वज़ाहत कयां, ॾाढी दिलचस्प क़िस्म जी ॻाल्हि आहे त करबला जो जेको वाक़ियो थियो इन में जेके औरतूं बेवा थियूं उनजो तइदादु 68 हो, 68 विडोज़ हुयूं, 72 शहीद थिया, उनजा बच्चा उहे कैदी थिया, असीर थिया। उन खां पोइ हीउ जेको तॾो आहे अदादारी जो उनखे इंस्टीट्यूट कयो हो इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, जंहिं पंहिंजी बजेट जो वॾो हिसो रखी छॾियो हो त मक़ाम मिना ते बि हाजियुनि जे अॻियां बयानु कयो त करबला जो वाक़ियो कीअं थियो। पर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमायो हो त कुल योमिन आशूरा कुल अर्ज़न करबला, हर ज़मीन जो खितो जेको बि आहे उहो करबला जे मिसाल आहे ऐं हर ॾींहुं जेको माण्हुनि जो गुज़रे थो उहो आशूर जे मिसाल गुज़रे थो। इन्हनि जो इम्पैक्ट असां ते सिंध जे कराची खां वठी कश्मीर ताईं, तव्हां कचे में वञो, तव्हां काछे में वञो, तव्हां पहाड़नि में वञो, तव्हां थर में वञो, तव्हां बर में वञो, डेज़र्टेड एरिया में वञो, ॿेलनि में वञो, उते बि तव्हांखे ज़िक्र हुसैन नज़र ईंदो, तरो ताज़ा, बिल्कुलु ताज़े ताज़े खून वांगुरु नज़र ईंदो। लिहाज़ा सिंध पेवस्त आहे करबला मौला सां, उन सां गॾु दिलि धड़के थी उनजी। जी वज़ीर साहब, अवां छा चवणु चाहींदो इन बाबति? असां तव्हांखे इहो ॿुधाइणु चाहींदासीं त आइमा मौसमियुनि सां, आले मोहम्मद सां करबला जे शहादत जी वाक़े जी ख़बर बि शायदि दुनिया खां सभ खां पहिरियों सिंध में पहुती आहे, उते पहुती आहे। उन खां पोइ अलाह तव्हांखे नेकी ॾिए थो उते उन्हनि जी ख़बर जीअं पहुती आहे त ईअं ई त सभिनी माण्हुनि उन ते वॾो ग़म माना उनजो माना हिकिड़ो इज़हार कयो आहे। तंहिंखां पोइ करबला जे वाक़े खां पोइ जेको हुजाज बिन यूसुफ़ जो दबदबो जबर ज़ुल्म थियो, उन खां मां सादात जॾहिं उतां पंहिंजी जान बचाए वरी सिंध ॾे रुख कयो त इहे साॻई सीस्तान खां थींदा, मकरान खां थींदा सिंध में अची दाख़िल थिया। ऐं पोइ जंहिंखे जिते बहितर मक़ाम महसूसु थियो त उहो रहंदो बि वियो, कि ईंदा बि आया। पर जंहिंमहिल सिंध में आया त सिंध वारनि हुननि जो इंतिहाई वालाना माना इस्तक़बाल कयो, उन्हनि खे इज़त ॾिनी, ख़ुशि आमदीद चई। एतिरे कर जो हू पाण निशावर घर निशार सैद जेकॾहिं असांजे घर अचे त असां ईअं चवंदासीं घर बि उनजो ई आहे। त एतिरी इज़त मोहबत ॾिनी। ऐं सीना बि सीना अहिड़ियूं ॻाल्हियूं बि अचनि थियूं त उन वक़्तु सैद जेकॾहिं घुमंदो हो त उनजी पेरनि जी खाक खणी आम माण्हू उहे पंहिंजी पोटली ठाहे घरनि में रखंदा हुआ त हिन जे सदके असां बरकत पवंदी। त असां सिंध जो आले मोहम्मद सां कोई रब्त इंतिहाई गहरो ऐं वॾो आहे। माना जेतिरो बि चइजे त ॼणो हुनजी गॾु वॾी हुनजी हालत तव्हां असांजे साम्हूं आहे। बाक़ी ॾिसो था हिन मुहर्रम में ॾिसो त ॼणो पूरो पाकिस्तान खे आले मोहम्मद जो ई ग़ुलाम सवाइ इहा ॻाल्हि वधे पई न। हाणे हीअं ॾिसो काफ़ी ॾींहंनि खां ख़ैरपुर ज़िले जी हिकिड़ी रियासत जे अंदरि हिकिड़ो इलाइक़ो डेवलप थियो आहे जागीर अली अकबर जे नाले सां, ऐं वियो आहियां ॾिठो आहे। उहो बि सहरा नुमा हिकिड़ो इलाइक़ो आहे जंहिंमें भिटूं आहिनि। उतां जे माण्हू जस्टिस ज़वार हुसैन नक़वी जेको आलमी अदालत जो जज बि रहियो, हितां जो माण्हू हुयो, सुप्रीम कोर्ट में रहियो, सिंध हाई कोर्ट में रहियो। उन्हनि तमामु वॾी वसी इलाइक़े में करबला वांगुरु ख़ैमा ठाहिया आहिनि, करबला वांगुरु उहो रस्ता राहूं ईअं महसूसु थींदियूं आहिनि करबला ज़िंदा आहे। तव्हांजे अॻु ॻाल्हाए थी राणीपुर जे इलाइक़े में तमामु शानदार बीबी ज़हरा सलाम जी ज़री पाक ठही वई आहे। वरी मीरनि जे ज़माने में ख़ैरपुर में जेको ज़री आहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी, तव्हां उन शहपार खे ॾिसो, उहा जेका बाली औरत हुई उन सां वाबस्ता जेके वाक़िया आहिनि। खुंबीअ जो मातम 200 साल खां हले थो, रोही जो ताज़ो 400 साल खां खणे थो। त सॼे सिंध जे इलाइक़नि में इहे मुख़्तलिफ़ करबलाऊं ठहियल आहिनि। उन्हनि जा नाला ई करबला आहिनि। करबला
सेवण में तव्हां वञो साईं तव्हांखे करबला साईं साबित अली शाह जी मिलंदी, हैदराबाद वञो तव्हांखे दादन शाह जी करबला मिलंदी, रोहिड़ी त सॼो शहर करबला जो अक्स नज़र ईंदो आहे। त सिंध जा केतिरा शहर आहिनि जिन जी सकाफ़त, इल्मु, हुनुर, या केॾी वॾी ॻाल्हि थी थिए त माण्हू जेको कफ़न थो पाए असांजे घरनि में जेको मैयत थींदो आहे उन मैयत खे जेको कफ़न पारायो वेंदो आहे उहो बि करबला मौला जो हूंदो आहे। जेकॾहिं उनजो हिकिड़ो गुसुल थींदो आहे उहो थींदो आहे आब ज़मज़म सां, त उनखे कफ़न करबला मौला जो थो मिले। ॿियो न बि मिलंदो आहे त करबला जी मिटी उन्हनि खे मुयसरु थींदी आहे। इहो एॾो वॾो रिश्तो आहे जेको अणटुट रिश्तो आहे। वक़्तु गुज़रण सां गॾु इहो घटिजे कोन थो, इन में इज़ाफ़ो थो थिए। जॾहिं बि माण्हू खे इहा ख़बर थी पए त करबला जे मिटीअ जी हीअ अज़मत आहे जिथे अंबिया अलैहिस्सलाम जे वारिस 1,24,000 नबियुनि जे वारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ुदा जी रिज़ा जे लाइ आख़िरी सजदो ॾेई अंबिया जी सीरत ऐं पौरे खे ज़िंदा रखियो। उन सरज़मीन जो त एॾो वॾो मक़ाम आहे जो मुंहिंजे खीसे में महिनत करबला जी मिटी पई आहे थी। हज़ार माण्हू उहे आहिनि जिन खीसे में करबला जी मिटी हूंदी आहे, उहो खणी ज़िंदा रहंदा आहिनि, उन ख़ाके शिफ़ा ते सजदो ॾींदा आहिनि। उहो कंहिं उर्दूअ जे शाइर चयो हो त तमन्ना थी के पेवंदे खाके करबला होते, तमन्ना थी के पेवंदे खाके करबला होते, अगरचे खाक ही होते मगर खाके शिफ़ा होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नंढे ब्रेक ते वेंदासीं नाज़रीन, कारे नवन जो मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते वरी पोइ वापसि अचूं था। अच्छा, पर उन खां पहिरियों असां मनक़बत ॿुधंदा वेंदासीं। असां सां गॾु नात ख़्वां मौजूदु आहिनि। जी सुकूने क़ल्ब पाएंगे नबी वाले अली वाले, सुकूने क़ल्ब पाएंगे नबी वाले अली वाले, सुकूने क़ल्ब पाएंगे नबी वाले अली वाले, सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले, सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले, जो मांगेंगे नबी से फातिमा हसनैन का सदका, जो मांगेंगे नबी से फातिमा हसनैन का सदका, मुरादे दिल की पाएंगे नबी वाले अली वाले, सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले। हुसैन इब्ने अली ने करबला में सर कटाया है, हुसैन इब्ने अली हुसैन इब्ने अली ने करबला में सर कटाया है, उन्हें ना भूल पाएंगे नबी वाले अली वाले, सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले। जहाँ ज़िक्रे नबी होगा वहाँ ज़िक्रे अली होगा, जहाँ ज़िक्रे नबी होगा वहाँ ज़िक्रे अली होगा,
یہ سن کر مسکرائیں گے نبی والے علی والے. سنو جنت میں جائیں گے نبی والے علی والے. کرم ہے خاص خاص کرم ہے خاص ارشد کے گھرانے پر محمد کا. کرم ہے خاص ارشد کے گھرانے پر محمد کا. کس کے گھر میں آئیں گے نبی والے علی والے. سنو جنت میں جائیں گے نبی والے علی والے. سکون قلب چرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے. حسین منی و انا من الحسین. آیا نہ ہوگا اسے طرح حسن و شباب ریت پہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پہ. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پہ. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پہ. عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھے دیا سارا نصاب ریت پہ. آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل
نبی کا کام تھا، آل نبی کہہ گئے کوئی نہ لکھ سکا دیو ایسی کتاب ریت پہ گلشن فاطمہ کتے سارے گلاب ریت پہ. سید انس علی جی آواز میں وہاں منقبت ॿुधी ऐं हुन सां गॾु गॾिजी मूंसां गेस्ट पैनल में ॿिया बि गेस्ट मौजूदु आहिनि. सभिनि खां पहिरियों शीरी ज़ैदी असां सां मौजूदु आहे. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ऐं हुन सां गॾु नात खां मौजूदु आहे फ़ाइज़ा कामरान. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का से करबला तक का सफ़र किस मकसद से तय किया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वबिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरन व मुईन. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ फरमाया है. और जैसा कि आपका सवाल है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा से चले हैं करबलाए मुअल्ला तक, और इस सफ़र का मकसद ज़ाहिरन जो हमें बयान किया जाता है और जो मकातिल में और जो तारीख़ में मौजूद है वो यही है कि असल में यज़ीद चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यज़ीद की बैअत करे, लेकिन वो इमाम हुसैन जो आगोश रिसालत मआब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा हैं, जिनकी रगों में खून मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, तो वो कैसे एक फ़ासिक और फ़ाजिर की बैअत करें और उसे कबूल करें और उसके सामने अपना सर तस्लीम ख़म कर दें. तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब तकाज़ाए बैअत किया गया तो आपको जब वलीद के दरबार में बुलाया गया तो वहाँ आपका जो अलल ऐलान मौक़िफ़ था, पहले तो वो ये कहता था कि रात की तारीकी में जो है आप यहाँ मामला हम आपसे करना चाहते हैं और बैअत के तलबगार हैं. तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तो ये इरशाद फरमाया कि ये तो रात की तारीकी है, कल दिन में आना, फिर देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा खिलाफत का मुस्तहिक़ है. और फिर वहाँ पर मौजूद एक शख्स कहता है कि अभी अगर हुसैन यहाँ से चले गए तो फिर दोबारा हाथ नहीं आएंगे, या तो इनसे बैअत ली जाए या फिर इनका सर कलम कर दिया जाए. तो उस मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मौक़िफ़ था आपने इरशाद फरमाया, और ये बड़ा ख़ूबसूरत बयान है और ये हमें वाज़े तौर से बयान करता है कि इमाम हुसैन का मकसद असल में क्या था. और फिर जो आप मदीने से चले हैं तो उस चलने के मौके पर जो आपने वसीयतनामा तहरीर किया है उससे भी आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आता है. पहले तो जब आपसे बैअत का तकाज़ा किया गया तो उस मौके पर आपने इरशाद फरमाया कि अय्युहल अमीर, ए अमीर जान लो कि मैं ख़ानदान नबूवत से हूँ और मैं वो हूँ कि जो ख़ानदान रसालत का परवरदा भी हूँ, और मैं वो हूँ जो मादन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महवर और मरकज़ हूँ. मेरी ज़ात वो है कि वही का नुज़ूल यहाँ होता है. और फिर फरमाया खुदा हमसे शुरू करता है और हम पर ख़त्म करता है. और फिर आप इरशाद फरमाते हैं कि देखो याद रखो यज़ीद फ़ासिक है, फ़ाजिर है, शराबखोर है, खुले आम गुनाह करने वाला है, अलल ऐलान मेजर सिंस को अंजाम देने वाला है. तो फिर उस मौके पर आपने इरशाद फरमाया मिस्ली ला युबायु मिस्ला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता. और फिर जब आप मदीना मुनव्वरा से चले हैं उस मौके पर जो आपने ख़त वसीयतनामा तहरीर किया जनाब मोहम्मद हनफिया के नाम, तो उसमें आपका वाज़े तौर पर जो मौक़िफ़ था वो यही था जिससे हम आपके क़याम के मकसद को बआसानी समझ सकते हैं. आप जब मदीने से चले हैं तो आपने जुमला तहरीर किया और वसीयतनामा था जिसका आगाज़ ऐसे था कि मैं खुदाए मुताल की हमदो सना बजा लाता हूँ और उस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसका इंतखाब खुदा ने किया है, उन्हें नबूवत के लिए चुना है, मैं गवाही देता हूँ वो रसालत मआब हैं. और फिर फरमाया कि मैं जानता हूँ कि और मैं गवाह हूँ कि जन्नत हक़ है और मौत हक़ है, कब्र से उठाया जाना हक़ है. यानी इस यकीन और एतक़ादात के साथ आपने अपने मौक़िफ़ को बयान किया, वसीयतनामे को तहरीर किया. और फिर आप तहरीर करते हैं मेरा
यहाँ से जाना दरअसल किसी फसाद का मुर्तकिब होना नहीं है, बल्कि मैं अपने जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना चाहता हूँ और अपनी उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ, और मैं अम्र बिल मारूफ़ करना चाहता हूँ और नहीं अनिल मुनकर करना चाहता हूँ, यानी लोगों को नेकी की जानिब बुलाना चाहता हूँ और बुराई से उन्हें रोकना चाहता हूँ। लिहाजा जो इस काम में मेरा मददगार है वो यकीनन मेरे साथ चलेगा। तो असल में आपके क़याम का मकसद कोई फ़िस्को फुजूर नहीं, कोई जंग नहीं। असल आपका जो क़याम है उसका मकसद ही यही है कि किसी न किसी तरह लोगों की हिदायत हो जाए और लोग जिस अंदाज़ से यज़ीद की बैअत कर रहे हैं उस बैअत को तर्क किया जाए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझाना चाहते हैं कि किस अंदाज से जब लोग यज़ीद की बैअत करेंगे तो यकीनन वो फासिक है और फाजिर है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो ख़ानदान नबूवत से उनका ताल्लुक़ है और वो जिस राह पर हैं वो हकीकी और सीधी राह है। तो ये क़याम का आपका मकसद है कि जिसके तहत आप मदीना मुनव्वरा से चले और फिर 3 शाबानुल मुअज़्ज़म मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन पर पहुँचे। सही। अच्छा, करबला के वाक़या में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या किरदार था? जी, आज 8 मुहर्रम की तारीख़ है और ये तारीख़ ख़ास तौर से मनाई जाती है जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार करबला के नाम। और जहाँ तक बात आती है जनाब हज़रत अब्बास अलमदार करबला की, तो हम सब ये जानते हैं कि आपका किरदार बड़ी मरकज़ी हैसियत करबला मुअल्ला में रखता है, और वो इस अंदाज़ से कि हुसैन तो मीर कारवान करबला हैं, लेकिन आपके लश्कर का जो सालार है, जो अलम बरदार है, वो कोई और नहीं बाबुल हवाइज अलमदार करबला की ज़ात है। और जिस अंदाज से आपने अलमदारी के इस मनसब को आखिरी दम तक बरकरार रखा वो बहुत काबिल गौर है। इसीलिए जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के बहुत से अलक़ाबात हमें मिलते हैं। जहाँ आपका लक़ब है कि आप बाबुल हवाइज हैं, जहाँ आपको कहते हैं कि आप सक़ाए सकीना हैं, वहाँ आपका एक लक़ब है कि आप हामिलुल लिवा हैं। हामिलुल लिवा यानी परचम का उठाने वाला। और अरब में जब किसी को अलमदार बनाया जाता था तो उसकी शुजाअत को देखकर, उसकी वफ़ा को देखकर उसे अलमदार बनाया जाता था और देखा जाता था कि इनमें कौन सबसे ज़्यादा बातदबीर है और होशमंद है, वफ़ादार है। इसी बुनियाद की वजह से, इन्हीं तमाम बातों की वजह से जो आपको मनसब मिला अलमदारी का, कि जिसके बारे में बयान किया जाता है कि जिस अंदाज से जनाबे सरकार वफ़ा अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार ने इस मनसब को निभाया है, तो ख़ुद एक तो ये होता है ना कि एक आम इंसान किसी आम इंसान की तारीफ़ करे तो वो आसान है, लेकिन एक ये है कि ख़ुद दुश्मन किसी की तारीफ़ करे, दुश्मन उसकी तारीफ़ करे, वो मरहला बहुत आगे का मरहला है। तो कहा जाता है कि जब यज़ीद के दरबार में जब तबरुकात आ रहे थे लूटे हुए, तो उस मौके पर ये परचम अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम भी था, जिस परचम को उठाया था जनाब अब्बास अलमदार ने। तो उस मौके पर जैसे ही यज़ीद ने उस परचम को देखा तो सवाल किया कि इस परचम का अलमदार कौन था। बयान किया गया कि इस परचम का अलमदार करबला में कोई और नहीं, अली अलैहिस्सलाम का बेटा अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार था। तो जैसे ही ये जुमला सुना तो कहते हैं कि यज़ीद जैसा शख्स जो दुश्मन है अहले बैत का, कि जिसने तमाम कामों को अंजाम दिया है, वो कई मरतबा अपने मकाम से खड़ा हुआ और फिर बैठा, फिर खड़ा हुआ, यानी ताज़ीम अबुल फ़ज़ल अब्बास में। और क्यों? इसलिए कि वो कहता है कि तुम देखते नहीं हो कि ये परचम जगह जगह से पारा पारा है, लेकिन इसका दस्ता सही व सालिम है। और फरमा रही हैं आप, यानी क्या मतलब? इस परचम का जो फरेरा है वो जगह जगह से पारा है, लेकिन दस्ता सही व सालिम है। क्या मतलब? यानी समझाना चाहते हैं कि अब्बास अलमदार ने आखिरी वक्त तक, जब आप जिहाद कर रहे थे, तीर आ रहे थे, तलवारें आ रही थीं, नेज़े आ रहे थे, तबर आ रहे थे, मगर आपने उस परचम की हिफाजत की, आखिरी दम तक उस परचम को गिरने नहीं दिया। तो कहता है कि ये जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की वफ़ा जो उन्होंने अपने भाई, कौन कह रहा है? ये यज़ीद जैसा मलऊन फासिक व फाजिर कह रहा है,
اور لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ عباس کی وفا تھی جو اس نے اپنے بھائی جناب امام حسین علیہ السلام کی جان کے خاطر نثار کی ہے اور ان پر قربانی پیش کی ہے. لہٰذا آپ کا ایک مرکزی کردار جو ہمیں نظر آتا ہے وہ آپ علمدار کربلا ہیں, اور مزید انشاءاللہ پھر ہم اس کو مزید واضح کر جائیں. جی فائزہ صاحبہ اساسا موجود ہے ان کا سن ہو بداسی. جی کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد, کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد, شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد, شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد, کوئی نبی نہیں. نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور, نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور, نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد, نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد, کوئی نبی نہیں. اور جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں, جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں, ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد, ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد, کوئی نبی نہیں. اور عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد, پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد, کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد, شیر خدا نہیں کوئی مرتضیٰ کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کربلا کے واقعے کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی خواتین پہ کیا گزری؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کربلا کا واقعہ بہت عظیم واقعہ کہ جس میں آپ کے ساتھ مرد حضرات تو ہیں لیکن آپ کے ساتھ تمام خواتین بھی موجود ہیں، اور خواتین کا اس اعتبار سے بڑا اہم کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ صرف ایسا نہیں تھا کہ کربلا کے میدان میں مردوں کا ایمان اور ان کا جذبہ اپنے عروج پر تھا اور صبر و استقامت ان میں موجود تھی. خواتین کربلا کا کردار بھی اپنے اعتبار سے بہت خاص تھا، اور وہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک تو کردار یہ نظر آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کربلا کے بعد خواتین کا بہت خاص کردار ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عاشور سے پہلے جو خواتین کا کردار تھا وہ کیا تھا؟ اصل کردار تو جب تمام مرد شہید ہو جاتے ہیں کربلا کے میدان میں، تو جیسے ہی تمام مرد شہید ہوتے ہیں اس کے بعد خواتین کا جہاد ہے. اب ان کا بڑا خاص رول ہے جس کو ہم نے واضح بھی کیا تھا اپنے بیان میں، لیکن خاص طور پہ اگر سوال یہ کیا جائے کہ عاشور سے پہلے جو خواتین کا کردار ہے وہ کیا مقام اور حیثیت رکھتا ہے، تو اگر دیکھا جائے تو عاشور سے پہلے بھی خواتین نے جو جہاد کیا ہے، جو کردار ادا کیا ہے، وہ معمولی نہیں ہے. اور اس اعتبار سے معمولی نہیں ہے کہ عاشور کے دن جن شہداء نے قربانی دی ہے اور جن شہداء نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ موٹیویٹ کس سے ہو رہے تھے؟ وہ خواتین سے، اپنی ماؤں سے موٹیویٹ ہو رہے تھے. اس لیے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میں تمام خیموں کا جائزہ لے رہا تھا تو اس موقع پر ہر ماں اپنے بیٹے کو آمادہ کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی جاتی تھی کہ اے میرے لال، جب کل کا دن آئے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے آقا و مولا پر فدا کرنا. یعنی اگر دیکھا جائے تو جن شہداء نے کربلائے معلیٰ کے میدان میں قربانی کو پیش کیا، ان میں بہت عظیم نام اور کردار ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہیں، جن میں سے ایک کا ذکر میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتی ہوں. اور کربلا میں ہمیں بہت ساری خاتون ملتی ہیں، خواتین ملتی ہیں، اور ہر ایک کا اپنے اعتبار سے بہت اہم کردار ہے، لیکن کچھ خواتین ایسی تھیں جو راستے میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو رہی تھیں اور ان کی پوری فیملیز امام کی بارگاہ میں آ رہی تھی اور اپنی قربانی کو پیش کر رہی تھیں. کچھ تو مدینے سے آپ کے ساتھ چلے تھے، کچھ آپ کے خاندان میں موجود تھے، لیکن کچھ وہ تھے جو مکہ مکرمہ سے حج کے بعد واپسی میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو رہے تھے. تو ان میں سے ایک فیملی ہمیں نظر آتی ہے جو زہیر قین کی فیملی ہے، اور زہیر قین ان شخصیت کا نام ہے کہ جنہیں امام نے سرداری عطا کی، اپنے دائیں جانب کے لشکر کا سپہ سالار بنایا، اور بائیں جانب حبیب ابن مظاہر سالار تھے، اور قلب لشکر میں جناب ابوالفضل عباس علمدار کربلا سالار تھے. تو زہیر قین کی شخصیت بھی معمولی نہیں ہے. تو اس موقع پر جب زہیر قین چاہتے نہیں تھے کہ کسی طرح وہ ملحق ہو جائیں امام حسین علیہ السلام کی ذات سے، وہ بہت دور اپنے خیمے لگا رہے تھے مکے سے حج کے بعد واپسی میں. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب زہیر قین اور امام حسین علیہ السلام کا جو خیمہ تھا وہ آمنے سامنے لگا، جیسے ہی زہیر قین اور امام حسین کا خیمہ آمنے سامنے لگا، ابھی زہیر دسترخوان پر موجود تھے، ان کے ساتھ 50 اور ساتھی ان کے موجود تھے. تو اس موقع پر یہ کھانا دسترخوان پہ موجود تھے، کھانا تناول فرماتے، اتنے میں ایک قاصد آیا، اور وہ قاصد آ کر جناب زہیر قین سے کہتا ہے کہ اے زہیر قین، اٹھیے، چلیے، آپ کو مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بلایا ہے. جیسے یہ جملہ کہا تو تاریخ میں جو جملہ موجود ہے کہ زہیر قین جہاں موجود تھے وہیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. یعنی آپ سمجھ رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، اور تاریخ کے جملے یہ ہیں اس طرح، اور ان کے ساتھی وہ اس طرح بیٹھے رہ گئے جس طرح پرندہ کسی کے سر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور بالکل ساکت ہو جاتا ہے. تو اتنے میں زہیر قین خاموش ہیں، ابھی قاصد کو کوئی جواب نہیں دے رہے، یہاں تک کہ پس پردہ سے ان کی زوجہ کی آواز آئی کہ اے زہیر قین، کیا ہوا؟ زہیر قین کہتے ہیں وہی ہوا جس کا ڈر تھا. کہا کیا مطلب؟ کہا امام حسین نے مجھے طلب کر لیا ہے اپنی بارگاہ میں، اور میں امام حسین کی بارگاہ میں جانا نہیں چاہتا ہوں. تو اس موقع پر زہیر قین کی زوجہ کہتی ہیں، یعنی آپ نے جو سوال کیا تھا
کہ کربلا میں جو خواتین موجود ہیں ان کا بھی خاص کردار ہے. ان کا خاص تو کردار. ان کرداروں میں سے ایک کردار ہمیں زہیرقین کی زوجہ کا ملتا ہے. تو جیسے ہی سوال کرتی ہے کیا ہوا زہیرقین کہتے ہیں وہی ہوا جس کا ڈر تھا، امام حسین علیہ السلام نے مجھے طلب کر لیا ہے. تو زہیرقین کی زوجہ یہ کہتی ہیں کہ اے زہیر، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو طلب کریں، وائے ہو آپ پر اور آپ جائیں نہ ان کی بارگاہ میں. یعنی جس انداز سے آپ نے موٹیویٹ کیا ہے اور غیرت دلائی ہے تو وہ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے. یعنی آپ دیکھیے یہ زبان کی تاثیر، اگرچہ کہ یہ خواتین میدان میں جا کر جہاد نہیں کر سکتی، لیکن اپنی زبان کے ذریعے سے اور موٹیویشن کے ذریعے سے اور حوصلہ افزائی کے ذریعے سے یہ مقام ادا کر سکتی ہیں کہ ہمیشہ قیامت تک تاریخ کربلا میں اپنا نام ثبت کروا سکتی ہیں. تو ان کے کہنے پر جناب زہیر ابن قین گئے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں پہنچے، اور جیسے مولا کی بارگاہ میں پہنچے تو ابھی تک تو نڈھال تھے اور سر ان کا جھکا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیا ہوا، امام حسین سے کیا گفتگو ہوئی کہ جب گئے تھے سر جھکا ہوا تھا، جب آئے تو چہرے پر عجب نور تھا، اس لیے کہ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام سے ملاقات کر کے آئے تھے. اور پھر وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اپنی زوجہ سے کہا تم آزاد ہو، جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ، میرے خیمے لگا دو مولا کی بارگاہ میں، اس لیے کہ میں اپنی جان کا نذرانہ اب مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو بہت ساری خواتین ہیں جن کا بہت عظیم کردار ہے، جن میں سے ایک کردار یہ ہے کہ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے مردوں کو موٹیویٹ کر رہی تھی. اور شب عاشور خاص طور پہ تمام خواتین یہ کہتی تھیں اپنے اپنے فرزندوں سے کہ تمہیں سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر اپنی جان کو فدا کرنا ہے. تو یہ بہت خاص رول ہے جسے آج بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، بی بی زینب کا کیا کردار تھا کربلا کے جناب میدان میں؟ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار تو ظاہر ہے مرکزی کردار ہے اور اسے کوئی فراموش نہیں کر سکتا. آپ جناب سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی وہ بہن ہیں کہ جن سے امام حسین محبت فرماتے تھے بہت زیادہ، اور خود جناب زینب بہت محبت فرمایا کرتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عقد ہو رہا تھا تو اس موقع پر ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ جب زینب سلام اللہ علیہ کا جو بھائی ہے حسین وہ کربلائے معلیٰ کے لیے عراق کے لیے روانہ ہو تو زینب بھی ان کے ساتھ سفر کریں گی. یہ بات عقد میں پہلے تحریر کر دی گئی تھی. اور مسلسل جناب زینب سلام اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی دن میں کسی بھی وقت یا شب میں جا کر آپ کے چہرے کا دیدار کیا کرتی تھی. بہت خاص محبت تھی ان بہن اور بھائی میں. اور وہ وقت آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ ساتھ جانا چاہتی ہیں تو اس موقع پر جناب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر تیار ہیں، آپ شوہر کی اجازت لیجئے. بس پہنچی ہیں، اجازت لی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہوئی ہیں. اور اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو واقعاً کربلائے معلیٰ آج زندہ نہ ہوتی. اس لیے کہ واقعہ کربلا دو مارکوں پر مشتمل ہے. ایک تو خود کربلائے معلیٰ ہے، لیکن اس کربلا کی نشر و اشاعت کرنے والی، اس کربلا کو مختلف مقامات پر پہنچانے والی ہستی کا جو نام آج ہم لے رہے ہیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. کہ آپ نے جس انداز سے کربلا کے واقعات کو ہر گلی گلی کوچہ کوچہ پھیلایا ہے، کربلا ختم ہو کر رہ جاتی اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار واضح طور سے اور روشن طریقے سے موجود نہ ہوتا کربلائے معلیٰ میں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اور پھر جس انداز سے آپ نے اس پروپیگنڈا کو جو یزید کروا رہا تھا کہ یہ وہ قافلہ ہے جو باغیوں کا قافلہ آیا ہے، یعنی آپ توجہ کر رہی ہیں کہ خاندان عصمت اور طہارت کی خواتین کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف قیام کیا ہے. تو اس موقع پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات کو کہ تمام لوگوں کو خاموش کرانے والی آپ کی شخصیت کہ اگر آپ اپنے روب و جلال سے کچھ کہہ دیں تو آپ کے سامنے کوئی لب کھولنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ شجاعت حیدری رکھتی ہیں. آپ علی مرتضیٰ علیہ السلام کی بیٹی ہیں
اور پھر جس انداز سے آپ نے مختلف مقامات پر خطاب فرمایا ہے، تو ان خطاب کا بڑا اہم اور مرکزی کردار ہمیں نظر آتا ہے. اور تمام خطاب میں آپ دیکھیے کہ ایک عام خاتون ہو اور اسے ڈرایا جائے، دھمکایا جائے. ایک تو یہ کہ ظاہری طور سے بھی ٹارچر دیا جائے اور مینٹلی طور سے بھی ٹارچر دیا جائے. عام خواتین کے لیے مشکل ہے یہ سہنا، لیکن زینب سلام اللہ علیہا کی ذات کہ آپ پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ آپ نے جس انداز سے ہر موقع پر جہاں ظالم یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور کس انداز سے تمہارے بھائیوں اور تمہارے بچوں اور بھتیجوں کو میدان کربلا میں خداوند عالم نے قتل کر دیا، تو جناب زینب خدا کا شکر ادا کر کے کہتی تھی کہ خداوند عالم کا شکر اور احسان ہے. یعنی یہ وہ شکر کی منزل ہے اور یہ حمد کی منزل ہے. آسان ہے بہت اچھے حالات میں صبر اور شکر کرنا، لیکن ایسے موقع پر کہ جب جلے ہوئے خیمے ہیں، جلتی ہوئی راکھ ہے، اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی حمد کرنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. سبحان اللہ. تھینک یو سو مچ شیریں صاحبہ. ہم آپ سے نعت سنتے جائیں گے، لیکن ناظرین رہے اسانجو ٹائم بالکل ختم تھی वियो आहे. प्रोग्राम जो वरी अवां सां मुलाक़ात थींदी. मूंखे पंहिंजी दुआउनि में यादि रखंदा. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान ज़िंदाबाद. जी. सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो. अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद, अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद, हम शक्ले मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, और अब्बास नामदार है ज़ख्मों से चूर चूर, उस पे करे वफा को हमारा सलाम हो. असग़र सी नन्ही जान पर लाखों सलाम हो, मासूमों बेख़ता को हमारा सलाम हो, मासूमों बेख़ता को हमारा सलाम हो. शहीद कौम की कश्ती तिरा गए, उम्मत के नाम